Online students, am I audible? Deepti, Nikita, Nishu, Arunima, all right. Omar, good morning everyone. Okay. Let's begin. Yesterday I gave you the introduction to economics. तो कल जितने हमने टॉपिक्स करे, this is the mere basics that everyone requires before they begin a new subject. अब ये तो हमने कल कर लिया. Today we have to start something related to the scheme of the syllabus. Now see, I ended my last lecture on the divisions of economics, wherein I talked about that economics is basically divided into 4 spheres. One is known as microeconomics, meaning studying of individual units in the economy. Another one is macroeconomics, which takes economy as a whole. Then we talked about mesoeconomics and finally the metaeconomics. Now these are spheres of research जिसको हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं. और फॉर नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिगर आउट कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछेगा. सो वी हैव सीन दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस मोस्टली फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वाला पार्ट. अब मैक्रो वाले पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको हम कहां कहां डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट आर दिस फेस ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रो बट मिनिस्क्यूल अमाउंट. इतना कम कि if you ignore it altogether, you can still cover your economics without even studying micro. But micro के कुछ parts important है. Those parts will be covered in the class itself. So micro will be taken at the last because it's not that important. Mostly questions would come from macroeconomics और macro को ही हम deal करेंगे. Now आज का जो पहला आपका सेशन रहेगा, as I promised you yesterday only, that I will be giving you the number of questions in prelims and mains that have come from this particular topic. Now this study, this analysis is very important for you. तो जो भी बच्चा 2024, 25, 26 में एग्जाम दे रहा है, it's very important for them to understand कि इकोनॉमिक्स को डील कैसे करना है and which are the spheres जहां से UPSC is currently asking the questions. So we will be taking a data set of around 7 years from 2016 to 2023 and we'll see कि question कहाँ से आ रहे हैं and then we will start off the first topic of the syllabus. Now what you'll do is you'll make a chart for prelims trend. पहले आप चार्ट एक बनाइए, prelims trend. We'll have some years 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 and 23. What we have seen, ये तो हो गया आपका years. And from here we'll write the components. Mostly question come from number 1, money, banking and financial sector. Money, banking and financial sector. Money, banking and financial sector. What we have seen from this particular topic, there were 6 questions in 2016, 6 questions in 2017, 7 questions in 2018, 7 again repeated in 2019, 9 questions in 2020, 6 questions in 2021, 8 questions in 2022, and again 8 questions in 2023.
So that is for your prelims. Money, banking and financial sector. Then we have budget and fiscal policy. Budget and fiscal policy. Budget and fiscal policy. Budget and fiscal policy. We had 3 questions here. Again 3 questions here. 4 questions here. 1 question, 1 question, 1 question, and 3 questions here, and 0 questions in 2023. Then we had the external sector. External sector. External sector. In external sector, we had 11 questions in 2016. 4 here, 4 here, 7, 7, 2, 4, and 1. Then we had sectors of economy. Sectors of economy. Sectors of economy. Like we have the topics like GDP, growth, agriculture, industries, etc. So sectors of economy में से we had 4 questions here, 8 questions here. We have 3 questions, 8 questions. We have 5, 4 questions, and 3 questions. Then we had topics like infrastructure. Infrastructure. There are 2 questions, 4, 1, 3, 1, 0, 2, and 1. And lastly, we have social sector. Social sector. Social sector में we have concepts like development, poverty, inequality, etc. We had 3 questions here, 4 questions here. We have 6, 2, 0, 0, 0, and 0. From last 4 years, there has not been any question from the social sector in the prelims of UPSC. Now see, this is an analysis for the prelims. Economics में generally if you add the number of questions, you have 8 questions here, 9, 10, 11, 12, 13. So around 13 questions in UPSC 2023. यहाँ पर अगर लिया जाए 8 हो गए 11, 15, 19, 21. Around 21 questions in UPSC prelims 22. Again here 8, 13 and 14. 14 questions. So we can safely say 15 को टच कर सकता है UPSC again. So in 2024 वाले attempt में you have to expect at least 13 to 14 questions from economics. तो आपका जितना भी total economics का portion है, out of 100 questions in prelims, you will have to expect 15% of your paper to exactly come from core economics. अगर उसमें फिर आप कोई ऐसे topic add कर ले, like concepts that are very much related to geography, so it will reach up to 20 questions. And if you add some concepts from environment as well, it will go up to 25 questions. Pure core economics के questions इतने हैं आप. Is it clear? So this is the weightage you have to provide it. Now see, यहाँ पर this is how prelims has to be cracked. We cannot study everything in the syllabus entirely. पूरा syllabus को एक समान weightage देना is, foolish. What you have to see is पिछले 7-8 सालों में trend कहाँ की तरफ है. So if the trend is saying that economics is giving you at least 15% of the paper,
So that is very important. The entire science and technology would only give you around 10% of the paper. So you have to give weightage according to your own, subject. A weightage be, don't give it to the entire subject. The weightage has to be given to the topic that gives you the most benefit. So you can clearly see the topic which is very popular in the prelims examination is money, banking and financial sector. And it would not give you any question in the mains examination. So when we study money, banking and financial sector, it has to be studied from prelims perspective. Because the analysis data आपको बता रहा है. It is not giving you any question in the mains. It is giving you all the questions in the prelims. So don't go and study money, banking and financial sector from the mains perspective because है ही नहीं, question ही नहीं कोई. तो जब भी ये 3 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, money, evolution of money, the forms of money, cryptocurrencies, etc. ये सब, then banking structure of India, RBI and the subsidiary banks and the commercial banks and the cooperative banks of India, कैसा banking का structure है, what is the monetary policy, then you study about the financial sector, the SEBI, the share market, the equity market, the debt instruments, etc. ये सब आपको पढ़ना from the prelims perspective. Won't give you much any question in the mains. समझ रहे आप? तो this is raw data जो आपको बता रहा है कि करना क्या इकोनॉमिक्स. तो ये है आपका सबसे पॉपुलर सेक्शन जिसमें आपको 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे इसमें. We have not seen any question from budget and fiscal policy last year, but I expect at least 2 questions in the next year from this particular topic, budget and fiscal policy. Why? Because next year general election है और election होने वाला है. That is why the budget of next year is going to be very important. The fiscal policy of the government is going to be very important next year, and you will see some drastic changes that the government is going to do in the next budget. That is why the next budget would be important for your prelims examination. At least 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बिकॉज द ट्रेंड सजेस्ट कि आपसे 1 से 4 सवाल तो आ जाते हैं. इफ यू टेक एन एवरेज तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको. ये डेटा बता रहा है आपको. देन एक्सटर्नल सेक्टर, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम. तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 5 क्वेश्चंस वुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सेट्रा. उसमें सब क्या पढ़ते हैं. देन वी हैव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें अराउंड 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम इस्तेमाल होता है इसमें बिकॉज इट इज वेरी मच आस्क्ड इन मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसमें एक 2 सवाल आपको यहां पर आएंगे. देन सोशल सेक्टर में पिछले 4 साल में कुछ नहीं आया है. द ट्रेंड कैन कंटिन्यू, अगले साल भी कुछ नहीं होगा, बट द ट्रेंड कैन चेंज. अगले साल 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी इट इन अ वे कि एटलीस्ट वी कैन हैंडल 4 क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So this is the trend of prelims for economy. Now let's go to mains. I'm just changing the numbers now. Now, in the mains examination of 2016, we had around 25 marks. We had around 25 marks here. तो एक क्वेश्चन 10 मार्कर था, एक क्वेश्चन 15 मार्कर का था. Then you can see the trend is 0, 0 and 0. No question from this topic. Then there was one question 15 marks वाला. And then again 0 and one question 10 marks per. So it's not that important for your mains examination. There have been years, at least 4 years in the last 7 years where there was no question from this topic. Then you have budget fiscal policy. So at 12.5 marks at that time from this topic. Then 30 marks here. Then 25 here, then 25 here, then 15 here, then you have 20 here, then 0 here, and then 0 here. Then you have external sector, 25 marks in mains, 0 marks,
30 marks, 0 marks, 15 marks, 15 marks, 0 mark, 15 marks. Then you have again 25 marks here. Then 60 marks, huge jump. Then 50 marks, then 65 marks, then 55 marks, then 60 marks, then 85 marks, and then you had 45 marks. So this is the trend, continuing trend from the questions from this topic. Then you have infrastructure at 37.5 marks here. Then you have 10 marks here. At 15 marks, 15 marks. Again 15 marks. 30 marks here. 20 marks here. And no question. Then social sector में 50 marks, then 40, then 60, 75, 85, 45, 20 and 30. तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वी कैन सी मनी एंड बैंकिंग में देयर हैव बीन इयर्स कोई क्वेश्चन नहीं, तो खास कुछ सवाल नहीं आएंगे. इफ वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, तो इसको मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है, बट स्पेसिफिकली हैव टू अंडरस्टैंड कोई एक क्वेश्चन, कोई एक न्यूज जो मेंस रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से. देन यू हैव बजट फिस्कल पॉलिसी, you'll get around one question again from this topic in mains, या ज्यादा से ज्यादा 2 question. And you have another external sector, again only 1 question from this topic. Then you have sectors of economy, you can get 4 to 5 questions from this topic. 4 to 5 questions. Then you have infrastructure, 1 question. And then you have social sector, at least 2 to 3 questions. अभी आपको एक चीज का क्लैरिटी नहीं होगा, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन बाय दीज हेडिंग्स. वंस वी गेट इनटू इट आपको समझ आने लगेगा. फिलहाल के लिए मैंने आपको बेसिक स्फेयर्स बता दिए. ऐसे ही आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट के बारे में. यू शुड हैव अ चार्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स लाइक दिस, द चार्ट ऑफ लास्ट 7 to 8 years. पहले पेज पर wherein what you have written is the themes. इनको हम themes कहते हैं. मैंने इकोनॉमिक्स को themes में डिवाइड किया है. तो दिस इज द फर्स्ट थीम, सेकंड थीम, थर्ड थीम, एंड यू शुड नो कि किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं. So there are themes that are not important for prelims. There are themes that are not important for mains. You have to give it, its due weightage according to the importance in the level of the examination, whether it is prelims or the mains. तो जो प्रीलिम्स का वेटेज है प्रीलिम्स के हिसाब से देना है, जिसका मेंस का वेटेज है उसको मेंस के हिसाब से देना है. तो ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए आपने करना है. इकोनॉमिक्स के लिए आई हैव डन दिस फॉर यू, बट डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पढ़ना क्या और किसके हिसाब से पढ़ना है. प्रीलिम्स एंड मेंस का ट्रेंड. So this was your mains trend. Now see, it would have been very appropriate for us to directly start from money, banking and financial sector. But my experience is, if you directly start from money, banking and financial sector, the terms are very technical in nature. तो पहली बार जब आप expose होते हो economics से, it's very difficult for you to grasp everything that is being taught to you. So I will not be starting from this topic. I will directly go to the sectors of economy with a discussion about economy के कितने sectors है, and then what are the types of economic systems in the world, and then the concept of growth, the concept of GDP, the concept of national income, the methodology of calculating national income, the concept of inflation, everything is part of these sectors. ठीक है, तो हम पहले उधर ही चले जाएंगे. We'll finish it off, then we'll come to another topic. So we'll begin with the sectors of economy with the first discussion, that is
sectors of economy. Sectors of economy. Sectors of economy. Now see, first of all, the very basic rudimentary understanding of the terms. You don't expect any question from this, but just you have to understand terms का मतलब क्या है. You might have heard about the first, the primary, the secondary, the tertiary sectors, the quaternary sectors, the quinary sectors. At least पता होना चाहिए sector कौन सा है और उसमें क्या होता है. Then only we can understand the discussions about economy. So sectors of an economy, we have the entire economy. I told you yesterday only कि when you talk about macroeconomics, you look at economy as a whole. So once you look at economy as a whole, you see specific sectors in the economy. जब economy as a whole देखते हो तो आपको ये whole, you don't see it कि एक ही जगह एक ही economic activity हर जगह हो रही है. No, you see there are different economic activities happening in different sectors. So there is a sector wherein a specific kind of economic activity is happening. There is another sector wherein a different kind of economic activity is happening. There is another sector where a tertiary kind of economic activity is happening. So the first thing we study is what are the different sectors in an economy as a whole. ठीक है, तो sectors को हम तीन हिस्सों में divide करते हैं. So we have three primary sectors, major sectors. So first of all, keep writing with me. We have the primary sector. देखिए जहां जहां पर I have to dictate any definition, any data, therein I'll stop you. I'll tell you कि don't write, I'll make you write. Otherwise you keep on writing with me only. And if you feel like मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, you can let me know, मैं थोड़ा फिर धीरे धीरे बोल दूंगा. All right, primary sector. Now see, one important thing about primary sector, don't write, pay attention. Primary means you're doing the primary utilization of something. पहली बार कोई चीज utilize हो रही, primary, for the first time. Now what is being utilized here, because we are talking about a sector in an economy. Economy में क्या होता है? Economy में होता है इंडिया के अंदर, whenever we talk about economy primarily revolves around production. It revolves around production. Okay, what are you producing in the economy? That is why we all keep talking about GDP, gross domestic production, national income. It is again the concept of production. So economy mein what are you producing? Right now I'm delivering a lecture, I'm producing a commodity. Your father is selling apples, he is producing a commodity. Economy runs on production. So production क्या हो रहा है? In the primary sector, whatever you are producing, for that production, you are utilizing natural resources directly. So in the primary sector, we produce something by exploiting what? Natural resources. By exploiting natural, don't write, मैं लिखूंगा. By exploiting natural resources. तो आपने natural resource को उठाकर, you exploit that natural resource and you create a product. वो product आपका primary sector का product है. For example, if I exploit a natural resource like land को मैं exploit कर, it's a natural resource, I can produce agricultural products. तो agriculture क्या बन गया मेरा? Primary sector activity. Agriculture is part of the primary sector. Why? Because it is exploiting the natural resource and creating product, जिसको हम primary sector के product बोलेंगे. We have forest. Is it a natural resource? Yes. तो forest से you can get a lot of products from the forest, उसको बोलेंगे forestry. तो forestry में you exploit the natural resource like forest and you create the products part of the primary sector. You have concepts like mining, yeah, oil extraction. You have oil, which is a natural resource. You exploit that natural resource and create petroleum products. तो वो exploitation जो natural resource का हो रहा है and you creating crude oil from that, वो crude oil is your primary sector. ठीक है? Whenever you exploit a natural resource and create products out of it, that becomes primary sector activity. Write down one line. Primary sector. The economic activities which take place, while exploiting the natural resources.
while exploiting the natural resources such as forestry, fishing, mining, agriculture, oil extraction, etc. etc. Fine. So whenever we exploit the natural resource, that is part of the primary sector. Now people who are engaged in primary sector, people who work in the primary sector, let's suppose they work in the agriculture, in the forestry, in mining, in fishing, whatever the people, whatever the sector, if the people are engaged in these particular sectors, they are known as red collar workers. We call them red collar workers. So people engaged in primary sector activities are called red collar workers. Karan, Mani, Monica, Muhammad, Kiran, Indranil, is it clear? So we have red collar workers in the primary sector. The second sector is secondary. Secondary, the name only suggests it is secondary. Secondary sector. Secondary sector. Now secondary sector क्या है? Secondary sector is you take the raw material from the primary sector. Now see, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं. Pay attention. So there is a natural resource known as land. It is a natural resource. From land you created an agricultural product, let's say apple. तो आपने या राइस बनाया या कुछ भी, तो कोई आपने प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट तैयार किया known as apple. You have produced that from land. So by exploiting the natural resource, by taking that as the raw material, you created a product known as apple. ये है आपका प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट. Now what you do in the secondary sector is you now take this product, ये एप्पल वाला प्रोडक्ट, you use it as a raw material now. So what we'll do is, don't write, we will take apple, we will take the primary product as the raw material, we will further process this particular product and create a secondary product known as appy juice. क्या बनाया मैंने? Appy juice. तो मैंने यहां से प्राइमरी सेक्टर से I took the raw material, I further processed it and created another product known as the secondary product. ये हो गया आपका secondary sector, where processing is done primarily in industries. So because industries are involved here, secondary sector is also known as industrial sector. समझ रहे आप? Write down. Secondary sector. It contains all economic activities. It contains all economic activities, under which the raw materials extracted out of the primary sector, are processed. Are processed. It is also called industrial sector. For example, automobile sector, textiles. Now see, people engaged in the primary sector were known as red collar. People engaged in the secondary sector are known as blue collar workers. Generally red collar हम इसलिए बोलते हैं because people in the primary sector has an outdoor nature of the work, because बाहर काम करना है और बाहर धूप में reddish complexion, like that we say it. We have pink collar workers, we have white collar workers. It's because of the nature of the work they do. Generally has nothing to do with it has
नॉट मच सिग्निफिकेंस कि ऐसा कलर इस्तेमाल क्यों है, बट है when it was started for the first time, it was just because the outdoor nature of the work is such that we call it a red collar worker. इनका outdoor nature नहीं होता है, so we call them a blue collar worker. There is another worker we call a white collar worker, so उसका भी outdoor nature नहीं होता है, but the person is not creating any physical product, he is creating a service which is intangible, so we call it white collar worker. So it is because of the nature of the work they do. इसका outdoor nature नहीं है, that's why we have called it blue. इसका आउटडोर नेचर है, वी हैव कॉल्ड इट रेड, सो ब्लू कॉलर. उसके बाद है टेरिशरी सेक्टर. टेरिशरी सेक्टर नाउ सी, I gave you an example of the primary sector: agriculture, mining, oil extraction, forestry, fishing, etc. In सारे sectors में one thing is common, that whatever is being produced is a good. Whatever is being produced is a good. Primarily goods produce हो रहे हैं. Agricultural goods, oil extraction में oil तैयार हो रहा है, तो that is a good. Physical है, tangible है, you can touch it, you can see it. In industrial sector, you process it and you again create industrial goods. What do we create? Industrial good. Good physical tangible होता है. So whatever has been created so far is a good. But to help the primary and the tertiary sector, for example, in the primary sector you have agriculture. Agriculture mein the first thing you require is a seed, and the seeds are being created by pharmaceutical companies, by these agricultural companies, by these seed companies. Like the high yielding variety of seeds, we got it from, in the green revolution, we got it from Mexico. Again, the BT cotton, we got it from Monsanto. तो ये बाहर की बड़ी बड़ी companies, multinational companies are creating the seed. So whatever you are using in the agriculture, you first of all need a service of a scientist to create that seed in the first place. एक सर्विस की जरूरत है, एक रिसर्च की जरूरत है, एक साइंटिस्ट की जरूरत है. तो R&D काफी इंपॉर्टेंट है in the agricultural sector. Again, in the secondary sector, you have to create machines. Do you require engineers for that? And engineers provide you a service. So to help the primary and the secondary sector, we need to have a tertiary sector that is producing the services. So to help these goods being produced, you need a service. That is the tertiary sector where a service is being produced. Service क्या होता है? It is not tangible, it's not physical, you cannot see it. Invisible है, intangible nature होता है इसका. So whenever a service is being produced, that is a tertiary sector. For example, right now, whatever I am producing is a service because you cannot see it. A doctor is giving a service. Whenever you go to a bank, they talk to you for some time, and for that particular interaction you have with them, they open you a bank account and everything is digital. They are providing you a service. So banking is a service. Insurance is a service. ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल आप रिक्शे वाले पे चढ़े और रिक्शा वाला आपको मेट्रो स्टेशन से यहां तक छोड़ रहा है. दैट रिक्शा वाला इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस. यू कैन नॉट सी, बट ही हैज सोल्ड यू समथिंग, एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी यू आर गिविंग हिम द मनी. उन्होंने क्या बेचा, यू कैन नॉट सी इट, बट उन्होंने आपको कुछ बेचा, दैट इज अ सर्विस. तो व्हेनेवर सर्विस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट इज अ टर्शियरी सेक्टर. और सर्विस वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स. व्हाइट कॉलर वर्कर्स. Now, what do we have? Who are the white collar workers? For example, education is a tertiary sector activity. Education, healthcare, banking, education, healthcare, banking, insurance, communication, tourism, etc. Tourism, etc. For example, you go to Taj Mahal and you don't know the exact intricacies of that monument. So you hire a guide. वो गाइड आपको बताता है कि यहाँ पर ऐसे था, फिर ऐसे था, वहां से एक दूसरा ताजमहल बनने वाला था, जिसको ब्लैक ताजमहल कहते हैं.
अगर ये व्हाइट था तो एक एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट ताजमहल वाज बीइंग क्रिएटेड एट जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट. इसको हम ब्लैक, वो इट वुड हैव बीन ऑल ब्लैक और रात को आपको नजर भी नहीं आता. बट दैट वुड हैव बैंकरप्टेड द मुगल एम्पायर, द इकोनॉमी. That is why later on Aurangzeb, had his say and he just imprisoned his own father because it was said that he was not happy with the lavish expenditure of his father. So ये था पूरा system. The guide is telling you all this. हाँ, मगर वो बना नहीं फिर. जो exact replica बनाना था वो बना नहीं. Now the point is, everything that I'm telling you, the guide will tell you when you visit the Taj Mahal. So he's giving you a service. Of that service, you pay him for like 1,000 rupees. तो उसने आपको कोई चीज बेची. It is part of the tourism sector. टूरिज्म में आप जाते हैं किसी जंगल में, आप बस देखते हैं, उसको देखने के लिए आपको टिकट देना पड़ता है. So that is you're getting recreational service. आपको अच्छा लग रहा है. You're seeing the scenic beauty. आप गुलमर्ग चले गए, पहलगाम चले गए, वहां आपको टिकट देना पड़ेगा. तो गुलमर्ग में पहाड़ देख रहे हैं, जस्ट यू आर वाचिंग इट, यू आर नॉट परचेजिंग एनी पर्टिकुलर फिजिकल कमोडिटी, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग अ सर्विस. तो उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा. सो दैट इज अ कमोडिटी. तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज नाउ. टेरिशरी सेक्टर इज सब डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स बिकॉज सर्विसेज एक किस्म की नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी, वी हैव अ सर्विस that I as a teacher is providing. मैं एजुकेशन में हूं, so I am providing a service. I'm a white collar. I'm a white collar professional. मेरा white collar job है. But there is another person who is again providing a service. But his name is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam भी सर्विस ही दे रहे हैं. When he was head of the SLV-3 program, the satellite launch vehicle that was created, जो इंडिया का पहला रॉकेट है. सो बिफोर दैट, when he did that successfully, creating SLV-3, after that he was taken over by the government and made head of the IGMDP program, Integrated Guided Missile Development Program, wherein he headed the development of 5 integrated missile systems of India: Agni, Trishul, Akash, Nag and Prithvi. So it was under his service that these missiles were created. Now, APJ Abdul Kalam is also providing a service. He's the missile man of India. He's giving you a service, और मैं भी एक service दे रहा हूं. But there is a huge difference with the service that I am providing you and the service that APJ Abdul Kalam did. तो ऐसी service हर कोई नहीं दे सकता जो APJ अब्दुल कलाम ने दी थी. तो अब्दुल कलाम वाली जो सर्विस है, you require a very specific kind of skill set to provide that service. You have to be brilliant in your profession, then only you can become the APJ. आज आप 2-3 साल अच्छे से पढ़ लिए, you can also teach. But the idea is APJ हर कोई नहीं बनता, उसके लिए खास नॉलेज होना जरूरी है. So whenever you are providing a service wherein it requires a special knowledge, not everyone can provide that service. For example, everybody knows how to drive. Everybody knows that. So you get a car, you can drive. So giving a service that everybody can do. तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइव करें, it is not that you require a special knowledge to provide that service. Just you require a practice of around 6 months, you can provide that service. But a service like APJ Abdul Kalam, not everybody can provide that. It requires a special knowledge. For example, I have been teaching economics from last 8 years. मैंने इनकम टैक्स एक्ट का लेंथ ब्रेथ हाइट पढ़ा है. आई स्टिल एम नॉट एबल टू फाइल माई ओन ITR रिटर्न. मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं पाता. आई नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दैट. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता. आई कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही प्रोवाइड कर सकता है. यू रिक्वायर अ स्पेशल नॉलेज टू प्रोवाइड अ सर्विस ऑफ अ CA. यू रिक्वायर अ स्पेशल नॉलेज टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. क्या हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है? नहीं. आपको कोडिंग आना चाहिए. उसके लिए स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है. सो व्हेनेवर अ स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ सर्विस, दैट इज पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर, बट इट इज नोन एज द क्वाटरनरी सेक्टर. वी कॉल इट द क्वाटरनरी सेक्टर. राइट डाउन 4th point. क्वाटरनरी सेक्टर. क्वाटरनरी सेक्टर. Quaternary sector is
quaternary sector is known as the knowledge sector. Is known as the knowledge sector. Is known as the knowledge sector. It includes activities related to higher education, research and development. Higher education, research and development. थोड़ा तेज तेज लिखिए. Higher education, research and development. For example, tax consultants, software developers, etc. Software developers, etc. Tax consultants, software developers, etc. Then you have culinary sector. It is again part of tertiary sector. Culinary sector. Culinary sector. आते उस पर. Culinary sector. Now see, culinary sector में, it is, you are again providing a service, but that service is very, very, very special. Now that is a service that actually impacts the entire country. So for example, I am providing a service, it hardly matters to India. मैं एक छोटा सा टीचर एक छोटी सी जगह पर छोटे से इलाके में करोल बाग में ओल्ड राजेंद्र नगर में I am providing a service. India does not depend on my service, but India does depend on the service of Reliance, on the service of Adani Group. India does depend on the service of the top bureaucrats that are running the Prime Minister's office. India does depend on the service of Prime Minister himself. तो एक प्राइम मिनिस्टर की सर्विस और मेरी सर्विस में आसमान जमीन का फर्क है. That is the service that is actually taking the course of Indian economy. That is actually leading the Indian economy. That is actually the brain behind the socio-economic performance of the country. The country का क्या performance रहेगा, that is the service that decides the performance of the country. So whenever you have a special service like that, which is considered the brain behind the country, that service is part of the culinary sector. Right now, culinary sector involves all activities where top decisions are made. Where top decisions are made. For example, the highest level of decision makers in the government, comma, the corporate sector fall under it. The corporate sector fall under it. They are considered the brain behind the socio-economic performance of the country. The socio-economic performance of the country. Now see. Now, अगर tertiary sector की बात हो रही है, so what are the workers called? White collar. But if you have a specific knowledge that is required to provide a service, that particular type is known as pink collar workers. And if you have a specific service that is the brain behind the socio-economic performance of the economy, that is known as the gold collar workers.
We have other colors as well, but this is sufficient for the exam. Pink collar and gold collar. इसको gold क्यों बोलते हैं? It is understood because it is very valuable service. इसको pink इसलिए बोलते हैं because initially it was dominated by women. जैसे for example nursing sector. Nursing sector, according to economists, is a service. Nursing is a service that cannot be provided by everybody. You have to be very empathetic in nature. You have to be very sympathetic in nature as well to provide a service of a nurse. So nursing sector across the world has been dominated by women. तो initially जब quaternary sector बना था उसमें nursing वाला sector था. That is why इसमें pink color आ गया इसमें. Later on nursing के साथ साथ software developing, CAs, tax consultants वो सब उसमें add हो गया. पर इनिशियली जब quaternary sector बना था, it was primarily because of the nursing sector that was dominated by women, hence the color pink. तो ये है आपका थोड़ा बहुत sectors of an economy. I have not given you कि sectors का contribution कितना है इंडिया की इकोनॉमी में. That how much is the contribution of the agriculture to the entire national income of India? How much is the contribution of industries to the national income of India? That can only be taught when we study the gross value added. जब GDP के बाद हम GVA पढ़ेंगे वहां हम sectoral contribution देखेंगे इंडिया के national income में. फिलहाल के लिए this is just the basics. Nampa has a question. Why are women paid less than men? So a society का question, I will not be able to answer that, but I have my opinion that it depends on the sector. It's not a rule, but it depends on the sector. Like there's the harsh reality of the UPSC industry, and if you have a female teacher and a male teacher, the male teacher is but natural getting a higher pay than the female teacher. ये है UPSC industry में. But there are other sectors जहाँ पर लड़कियाँ अच्छा जॉब कर सकती है, in a sense कि वहाँ पर उनको ज़्यादा पे मिलता है. UPSC में क्या प्रॉब्लम है? It's not like कि females are not able to teach well. It's just the perspective of the students. तो ये असल में I was looking at the interview of आमिर खान. तो आमिर खान को यही सेम चीज बोला गया था. Why are women, female actresses paid less than male actresses? So what he said was कि male actors drive more crowd to the cinema. And it is not our problem. The Bollywood का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की सोसाइटी का प्रॉब्लम है. वो क्यों आते हैं मेरी पिक्चर देखने ज्यादा? अगर वो मेरी पिक्चर ना देखकर कंगना रनौत की पिक्चर देखने चले जाए तो शी विल बी पेड मोर देन मी. सो ये असल में सोसाइटी में इनकलकेटेड है मसला. ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे इंडियंस का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो दे डोंट प्राइमरली लुक एट द कंटेंट, दे जस्ट गो बिहाइंड द स्टार्स. तो वो सिस्टम है. यही यूपीएससी का भी बहुत हार्श और डर्टी रियलिटी है. पीपल, स्टूडेंट्स जनरली आर मोर ड्रिवन बाय अ मेल टीचर हियर. इट्स अ हार्श रियलिटी. जनरली, मैं जनरल बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस कैन बी देयर. जनरली अ मेल टीचर, students are more driven by him. And if you bring more crowd to the class, institute is going to pay you more. तो वो सिस्टम है, बहुत हार्श है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक, वेरियस इकोनॉमिक systems. Various economic systems. Various economic systems. Now see, tell me, this is Indian economy. तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं सर्कुलर में. ये इंडिया की पूरी इकोनॉमी है. सो when we talk about macroeconomics we look at Indian economy as a whole. And the first question we addressed was, what are the different sectors of Indian economy? So sectors में we covered the primary, the secondary and the tertiary, then the quaternary and the quinary. हो गया sectors खत्म. अब हर sector का कितना contribution है? For example, we have the entire economy contributes to our national income, which is around 100 crores. Example, 100 करोड़ का हमारा टोटल नेशन का इनकम है. So my question is,
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? Is the major contribution, is it given by the agricultural sector, is it given by the industrial sector, is it given by the service sector? तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? तो इसको हम कहते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम. ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ जीवीए. वी कॉल इट ग्रॉस वैल्यू एडिशन. ये आपको अभी समझ नहीं आएगा जब तक हम जीडीपी नहीं पढ़ेंगे पहले. सो आई एम पुटिंग इट ऑन होल्ड फॉर नाउ. आई एम नॉट गिविंग यू द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन. इसमें डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. जब आप मेंस में इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें ये लिखना पड़ता है आपको, तो मैं डेटा आपको लेटेस्ट दे दूंगा जब मैं जीवीए पे आऊंगा. तो फिलहाल के लिए पुट इट ऑन होल्ड. आई एम नॉट गिविंग यू द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट आई एम इंस्टेड गोइंग टू गिव यू इज दिस इज द इकोनॉमी एज अ होल. Once we have studied these sectors of the economy, उसके बाद जो second question आपके सामने आता है, that is what kind of economic system does India have? India का system कैसा है? Like I told you yesterday, when you have an economy, you have a system in place that encompasses all the principles, models and theories of your particular domain. तो इंडिया के अंदर कौन से principles हम follow करते हैं? इंडिया के अंदर हमारा कौन सा system है? इकोनॉमिक का system कैसा है? Now that is another very important question कि इकोनॉमिक का सिस्टम का है. It is your first chapter of Tamil Nadu class 12. ठीक है, तो उसमें पहला ही चैप्टर है ये कि इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है. इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी पहले ही चैप्टर में इकोनॉमिक सिस्टम्स मिल जाएंगे आपको, मैक्रो इकोनॉमी वाले. तो इकोनॉमिक सिस्टम्स में we'll see that India, what is India following in terms of the principles and models. Now various economic systems में we have majorly first kind of economic system known as market economic system. Market economic system, ये पहला सिस्टम है, market economic system, simply known as market economy. Market economy और private enterprise system, प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम और अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम, अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम और अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. पॉइंट वाइज देखेंगे व्हाट डू आई मीन बाय दिस ग्रेजुअली. इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आया मार्केट इकोनॉमी पर. द फर्स्ट पॉइंट इज ये इकोनॉमिक सिस्टम कब आया? सो साइंटिस्ट टेल अस दैट दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम. पहला फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम that came out of the traditional economies, जो पहला formal economic system develop हुआ दुनिया में. First formal economic system. Who gave this particular idea of a market economic system? It was given by Adam Smith, again in his book in 1776, जो कल अपनी किताब लिखी Wealth of Nations, wherein he gave the definition of economics as science of wealth. उसी किताब में in 1776 he gave the idea of a market economic system. Market economic system. And just after he gave the idea of market economic system in 1776, United States of America in 1777, 1 year after he gave the idea, adopted this system. Adopted it. So who became the first capitalist economy in the world? USA, United States. USA. USA. Now, ये तो हो गया brief factual knowledge about the system. Now, what is the concept? What is the principle? What is the theory guiding this particular system? So, I told you when you have a system, the system encompasses some principles. So what is the principle of a market economic system? So if there is a country which is a market economy,
or a market economic system, what are the principles that the country is following? इसका एक अपना प्रिंसिपल होगा. तो प्रिंसिपल क्या है इसका? डोंट राइट. प्रिंसिपल ये है, मैं लिखाऊंगा. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का प्रिंसिपल ये है दैट इन आवर इकोनॉमी देयर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स. इन एवरी इकोनॉमी देयर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स. हर इकोनॉमी में होते हैं कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स. Central problems, in other words, means there are some questions that need to be answered. So whenever in 1947 India got independence, उस independence के time आपको बोला गया था first answer these central problems. Once you answer the central problems, these answering of the central problems decide the principles that you're following. तो आपकी country में कौन से principles है वो depend करता है how have you answered these central problems. If you answer the central problems in a certain way, you become a different system. If you answer the central problems in a different way, you become a separate system. तो आपका सिस्टम कैसा है, आपके प्रिंसिपल कैसे हैं, that depends आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जवाब कैसे दिया है. And what are these central problems? There are 6 central problems. साइड पे लिख लेना आप कहीं पे. The first central problem is what to produce. That is problem of allocation of resources. मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ये. How to produce, that is problem of distribution. Third is for whom to produce. That is problem, sorry, correct it. Problem of choice of technique. Then you have for whom to produce, problem of distribution. Then you have problem of economic efficiency, problem of full employment, and problem of growth. These are the 6 central problems of the economy. 6 central problems. Problem of growth. Last one is problem of growth. Why am I teaching you central problems? Because you need to understand how to answer these problems. So once you answer them, you become a specific system. So if you have a capitalistic economy that answers these questions in a certain way, तो आंसर क्या है वो अभी आएंगे उस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स जिसका जवाब देना पड़ेगा. एडम स्मिथ इन हिज बुक आंसर्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड ही प्रोपाउंडेड अ डिफरेंट सिस्टम नोन एज अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम. उसका आइडिया था आंसरिंग दीज प्रॉब्लम्स इन अ सर्टेन वे. नाउ सी, फॉर एग्जांपल, one thing I told you yesterday that in 1947 if you were the Prime Minister of India, the 5th problem is problem of full employment. In 1947 if you were the Prime Minister of India, people would ask you कि देश में करना क्या है, what do you want to do? And I told you the answer to that question is you want to achieve growth. आपको growth चाहिए. Once you have growth, you can create wealth. Once you create wealth, you can use that money for the public, can provide them basic necessities, provide them education. वही तो मकसद होता है. Provide them justice. That is the objective of the country. Now the question is, how do you achieve growth? Growth मतलब क्या? Can I say that growth simply means if I am right now earning rupees 100 and next year I'm earning rupees 150, my growth is 50%? Can I say that? तो grow करने के लिए you have to increase your income. You have to increase your income. Income बढ़ेगा तो grow होगा. So to have growth in the country, I have to increase my income.
बट हाउ कैन आई इंक्रीज माई इनकम? मैं इनकम अपना कैसे बढ़ाऊंगा? सो इफ राइट नाउ Edukemy has a specific income by teaching, let's suppose, 5 batches, if they have to increase their income, they have to produce more, they have to teach more, they have to produce a lot of classes. For example, मेरा इनकम कैसे डिसाइड होगा? मैं एक क्लास में 1 घंटे में मान के चलिए 6,000 रुपए लेता हूं, तो 1 घंटा इंटू 6,000, इधर मैं आपके साथ लेट्स सपोज 3 घंटे दे रहा हूं, तो दैट मीन्स हाउ मनी? 18,000 पर क्लास. अब ये मेरा इनकम है एक दिन का. बट नाउ आई वांट टू इंक्रीज माय इनकम. तो अगर मैं 3 घंटे दिन में दे रहा हूं और मुझे 18,000 मिल रहे हैं, तो मुझे 6 घंटे अगर मैं दूंगा तो मुझे 36,000 मिलेंगे, राइट? तो आई हैव टू प्रोड्यूस मोर टू अर्न मोर. इफ आई प्रोड्यूस मोर आई अर्न मोर, इफ आई सेल मोर आई अर्न मोर. जितना मैं कमाऊंगा उतना मेरा ग्रोथ होगा. सो टू हैव ग्रोथ आई हैव टू इंक्रीज माई इनकम, एंड टू इंक्रीज माई इनकम आई हैव टू प्रोड्यूस. मुझे प्रोडक्शन करना है, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो. जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इनकम. दैट इज व्हाई व्हेन इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द इनकम, नेशनल इनकम, दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. आप जीडीपी बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ेगा तो ग्रोथ मिलेगी आपको. नाउ द क्वेश्चन इज, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन. आपको प्रोडक्शन करना है. द क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है? You have to answer this question. What do you want to produce in the economy? Do you want to produce agricultural commodities? Do you want to produce industrial goods? Do you want to produce services? आपको educational services produce करनी है, financial services produce, क्या produce करना है आपको? That is the question. ठीक है? And somebody has to answer this. Now, for example, who is answering this question in India? India में आपको क्या काम करना है? Who tells you that? You decide it. आप खुद बताते हो कि मुझे क्या करना है. Whatever I want to produce, I will produce. So nobody is telling you to produce something. You decide it on your own. Now a smart individual is the one who takes into consideration, before he starts production, he takes into consideration the market sentiments. Market sentiment हो गया, मैं ऐसे ही अंधाधुन प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं कल को मैं उसको बेच भी पाऊं या नहीं. तो whatever you are producing, you have to ultimately sell it. So there has to be demand in the economy. जब डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, then only you sell it, then only you produce it. When there was demand that you have to study economics, then I came here to produce economics. If there is no demand, I will not produce. A smart individual is the one, before he starts any unit of production, before he starts any business activity, he has to take care of the market sentiments. Market चाहता क्या है? Market में डिमांड किसकी है, मैं वही सप्लाई करूंगा. So once you decide what to produce on the basis of market forces of demand and supply, डिमांड किसकी, सप्लाई क्या हो रहा है, इसको दिमाग में रखते हुए, if you decide what to produce, that is you're answering the question of the first problem of allocation of resources. For example, now see, I have decided I have some certain resource. मेरे पास कुछ पैसा है, money, this is my resource, and I want to allocate this resource to produce something. Because if you don't have money, you cannot set up a factory unit. तो आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा है, you want to allocate this money for the production of some commodity. So where do you have to allocate? कहां allocate करना है? एग्रीकल्चर में allocate करना है, इंडस्ट्री में allocate करना है, सर्विस में allocate करना है, एजुकेशन में allocate करना है. Where do you want to allocate your resources? And wherever you allocate the resources, that is the commodity you produce. I allocated my resources for agricultural activities. So what I will be producing is agricultural commodities. I allocated my money for the setting up of a factory unit. What I will be producing is industrial goods. So जहां allocation होगा वहीं पे production होगा. So the idea is कहां पर allocation करना है resources का, कहां पर कैसी production करनी है, this question has to be answered. And if this question is answered by the market sentiments of demand and supply, that becomes a capitalistic economy. तो capitalist economy क्या है? That tells you government does not decide what to produce. Government नहीं बोलेगी आपको कि आप ये काम मत करो, आप बिजनेस मत करो, आप फलाना काम करो, आप ये वाला काम करो. Government does not say that. Government आपको बोलती है you decide खुद से. And how do people decide? On the basis of demand and supply. Demand and supply decides everything. आपका यहां आना, आपका fee. Now for example, whatever fee you have paid at Edukemy,
This is not Edukemy that has decided it. This is you who has decided it. आपने खुद अपना फीस डिसाइड किया है. People don't understand it. This is economics. Let's suppose आप में से सिर्फ 5 बच्चे क्लास में होते हैं, तो डिमांड क्या है? काफी कम. जब डिमांड कम है और एडुकेमी के पास सप्लाई काफी ज्यादा है, ये 100 बच्चों को पढ़ा सकती है क्लास में, लेकिन 5 ही बच्चे आ गए क्लास में, तो उनको क्या करना है? डिमांड बढ़ाने के लिए एडुकेमी विल हैव टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस. फी कम करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे आएंगे. अब मान के चले हमारी कैपेसिटी है 100 और बाहर 1000 बच्चे खड़े हैं, सो ह्यूज डिमांड, सो एडुकेमी फी अपना बढ़ा देगा. तो डिपेंड करता है डिमांड कितनी है आपकी डिमांड के बेसिस पे आपका फी डिसाइड होता है. ठीक है, सो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई डिसाइडिंग एवरीथिंग. तो इफ डिमांड एंड सप्लाई इज डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, कहां पर यू हैव टू एलोकेट योर रिसोर्सेज, दैट बिकम्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. But if it is not demand and supply that is deciding it, if it is the government who is telling you कि ये करना है, government is telling you मुझे 50 यूनिट चाहिए फैक्ट्री की, government is telling you मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए एग्रीकल्चर में, government is telling you I want 50,000 tons of cement being produced in 1 year, government is giving you specific targets कि ये करो, ये करो, ये करो, ये बनाओ, ये प्रोड्यूस करो. That is not capitalistic economy, that is government deciding it, that becomes a socialist economy. That becomes socialist. Socialist में who answers the first question? Government. Capitalist में who answers the first question? Market forces of demand and supply. समझ आ रहा आपको? This is the basic difference. Second question. Now you have decided that what I have to produce. मान के चलिए I decided that I want to produce in my country, I want to produce cars. मैंने डिसाइड कर लिया. क्यों डिसाइड किया? बिकॉज आई फेल्ट लाइक मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे हैं, अभी कार्स की डिमांड ज्यादा है, देयरफॉर आई वांट टू सप्लाई दैट. आई वांट टू केटर टू द डिमांड ऑफ इंडियंस, आई वांट टू सप्लाई कार्स. अब अगर कार सप्लाई करने हैं तो दैट इज माय प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रोड्यूस, देयरफॉर आई हैव आंसर्ड माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस. आई वांट टू प्रोड्यूस कार्स. वेयर डू आई एलोकेट माय रिसोर्सेज? आई एलोकेट माय रिसोर्सेज इनटू ऑटोमोबाइल सेक्टर. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड. सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू प्रोड्यूस कार्स, बट हाउ डू यू प्रोड्यूस इट? Because producing cars can be done by 2 ways. Either you can go for a capital intensive work where machines are being used, robotic arms are being used for the production of cars, like Tesla की giga factory, सब कुछ सारी टेस्ला की गाड़ी आपकी रोबोट्स बना रही है. On the other hand, you can have labor intensive work where people are being used. So tell me, what is the technology you want to use? Technique कौन सी इस्तेमाल करनी है for the production of the cars? That is, whatever you have to produce now, answer the second question, how to produce. Second question का मतलब क्या है? Problem of choice of technique. कि जो भी प्रोडक्शन करना है वो टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करोगे आप, whether it is capital intensive, whether it is labor intensive. तो ये second question है. If the second question is answered by the market, it becomes a capitalist economy. If the second question is answered by the government, it becomes a socialist economy, like we had in the USSR. समझ आ रहा आपको? That is second question. Third है, for whom to produce. For whom to produce हो गया. For example, मैं बिहार के किसी दूर दराज किसी गांव में हूं, where people don't have much money. Therein I set up an automobile sector का एक यूनिट, एक गाड़ी बनाने का यूनिट, और what I produced was cars. That is 4 crore per unit. 4 करोड़ की गाड़ी बनाई मैंने बिहार के किसी दूर दराज इलाके में, where the people don't have much money. Tell me, when I produced a car which is 4 crore per unit, have I produced this commodity for the people of that area? 4 करोड़ की गाड़ी कितना ही भारत का कितना ही हिस्सा खरीद सकता है? people generally go for 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh, चलो मान के लिए 80 लाख की गाड़ी ले लिया. बहुत कम ऐसे लोग हैं इंडिया में जो 1-2 करोड़ के ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं. तो ये है आपका whatever you have produced, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका मार्केट कहां पर है. आप राजेंद्र नगर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो, आप लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो. फॉर whom are you producing? That is, whatever you have produced, उसको डिस्ट्रीब्यूट कहां करना है. That is the problem of distribution.
तो यहां पर गवर्नमेंट कैन टेल यू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड जहां एक्सपोर्ट करना है करो, दुनिया के किसी भी कोने में आप बेचना चाहे बेच सकते हैं, ठीक है, मगर पाकिस्तान नहीं बेच सकते। वाई? गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। तो यहां गवर्नमेंट इज टेलिंग यू आप कहां बेच सकते हो, कहां नहीं बेच सकते। इफ द गवर्नमेंट हैज लिमिटेशंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट हैज पुट लिमिटेशंस ऑन इट, आप कहां बेच सकते हो, कहां नहीं बेच सकते हो, दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि जहां बेचना बेचो, मार्केट जहां है आपका वहां बेचो, दुबई में जाना है दुबई में जाओ, पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाओ, दैट इज अ फ्री मार्केट। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यही आपने लिखा, मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज फ्री मार्केट सिस्टम wherein there is no particular restriction, आपको जहां बेचना बेचो, free market, no taxes. So that is the answer to the question, problem of distribution, where do you want to sell it. Then you have problem of economic efficiency, चौथी problem of economic efficiency. Now see, tell me, we have India में we have certain resources. Are these resources limited or unlimited? We already have limited resources. So when you have limited resources, suppose these are the resources of India, these are already limited. Can we afford to misuse these resources? No, because the resources are already limited, scarce. So we cannot afford to misuse these resources. These resources have to be used efficiently. Another big problem of economic efficiency. रिसोर्सेस को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। सो यू हैव ह्यूमन रिसोर्स, यूज इट एफिशिएंटली, लैंड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, यूज इट एफिशिएंटली, ऑल्सो कीप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, यूज इट सस्टेनेबली। तो वही मैं आपको बता रहा था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। देन यू हैव प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पे अटेंशन, नाउ सी, these are the resources of India, all resources of India. But with the current level of technology we have, we are not able to employ all these resources. We are only able to employ this much of resource. और इसके हिसाब से हमारा जो GDP है, that is, let's suppose 150 lakh crore, based on the resources that we have utilized. There are still a lot of resources that are unutilized. अभी तक utilize ही नहीं किया. Tell me, can India achieve its true potential until it utilizes all its resources? Right? If we have to achieve our true potential and exact potential कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना GDP बना सकते हैं, we have to employ all the resources. तभी हम अपने पोटेंशियल पे पहुंचेंगे. But for now India is not at its potential. इंडिया का जो actual GDP है, it is less than its potential. एक्चुअल सिर्फ इतना है जो इस्तेमाल हो रहा है, but we have the resources. So there is another problem कि you have the resources. The another problem is employ these resources to full potential. That is your fifth problem of full employment. Full employment not only of labor, सिर्फ इंसानों का employment नहीं, but of all the natural resources, उनका भी employment, सबका employment, full employment करना आपको. Then only you reach the full potential in the economy. Sixth problem is problem of growth. Now see, suppose this is India. Yeah, I can take an example from the class itself. उसके बाद इंडिया पर आएंगे. Let's suppose, what's your name? Cross, literal cross, ये वाला क्या मतलब है इसका? Christian wala cross. Where are you from? So cross, tell me, are you single? Okay. Tell me how much salary is sufficient for you right now? 15K. So cross says that if I get 15K per month in 2023, that is sufficient for me. But tell me, is this 15K sufficient for you in 2033? How much do you require? तो उस वक्त एक क्रॉस के साथ दो छोटे छोटे क्रॉस और होंगे. So you have a big large family to feed. उस वक्त आपको कितना चाहिए? 1.5 लाख रुपए. राइट, आपको ज्यादा चाहिए. You have to keep on growing. अगर आपका इनकम स्टैटिक रहा, that is a dead end. आप कहीं नहीं पहुंचोगे.
In the same way, if India has a GDP of 150 lakh crore in 2023 and it has the same GDP continuously for the next 10 years, it's not going to stay. If the economy is static, a static economy is a dead economy. Dead. अगर आप स्टैटिक पे रहे, आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है. दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज टारगेट्स कि आज 150 है, अगले साल 160, उसके बाद 170, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट, फिर 6 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 20 ट्रिलियन. ये कंटिन्यूसली चलेगा. यू कैन नॉट बी स्टैटिक. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग. इफ यू डोंट ग्रो, यूर स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स डेड. इकोनॉमी में स्टैटिक डेड होता है. So these are your 6 central problems. You cannot be static. You have to keep on growing. Now, let me come back to the discussion we had. Market economic system. So how many central problems do we have in the economy? 6. कौन सी जल्दी? What to produce? Problem of allocation of resource की produce क्या करना है? Second, how to produce? Problem of choice of technique. For whom to produce? Problem of distribution. Problem of economic efficiency, problem of full employment, and problem of growth. Now, if all these central problems are answered by the market, are answered by whom? Market. Market में कौन आंसर करता है? Demand and supply. Government is not answering this. Market is answering. Market is deciding क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए बनाना है, सब कुछ. If all these central problems are answered by the market, it becomes a market economy. That is what Adam Smith said. कि market पे छोड़ो सब. Market will decide what to produce, how to produce, for whom to produce. Everything will be decided by the market. Is it clear? यही मैं आपको समझा रहा था. Central problems, answering the central problems. If the central problems are answered by the market, forces of demand and supply, that becomes a market economy or a capitalist economy. Now, if all major decisions in the economy is taken by market, what does the government do? Market economy mein, what does the government do? Government ko bola. Adam Smith said to the government that what do you have to do is you follow a policy of laissez-faire. Government should follow, write down, government should follow a policy of laissez-faire. Government should follow a policy of laissez-faire. What is laissez-faire? Leave it alone. Leave it alone. Leave it alone. किसको छोड़ना है? Economy. Leave the economy alone. Government should follow the policy of laissez-faire. Don't interfere. Laissez-faire simply means policy of non-intervention. Policy of non-intervention. All major decisions taken by whom? Market forces. And what should the government do? Laissez-faire, policy of non-intervention. Do not interfere in the economy. Have you heard about that saying of the Prime Minister? Wherein he said, government has no business to be in business. उन्हें बोला था कुछ साल पहले, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिजनेस करना. गवर्नमेंट हमें डिफेंस वगैरह दे दे, लॉ एंड ऑर्डर समझ, गवर्नमेंट का काम है. बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट का काम नहीं है. गवर्नमेंट शुड नॉट सेल यू ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट शुड नॉट सेल यू एजुकेशन, गवर्नमेंट शुड नॉट सेल यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं. गवर्नमेंट को हमें डिफेंस, पब्लिक ऑर्डर वो सब संभालना चाहिए. बाकी सारा का सारा काम मार्केट संभालेगा. मार्केट खुद संभालता है सब कुछ. ऑल मेजर डिसीजंस इन द कंट्री, इन इंडिया आल्सो टुडे, आर डिसाइडेड बाय द मार्केट. गवर्नमेंट डज नॉट कम टू ओल्ड राजेंद्र नगर एंड टेल्स दीस कोचिंग सेंटर्स कि आपको कितना फी रखना है, आपको कितने बच्चों को पढ़ाना है, आपके कितने क्लासरूम्स होने चाहिए. दे डोंट इंटरफेयर. आप करो जैसे जितने बच्चे हैं, डिमांड उसके हिसाब से सप्लाई करो. डिमांड सप्लाई डिसाइड्स द फीस इटसेल्फ. तो इसमें आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा वहीं पे प्राइस डिसाइड होता है. So it is simply like this. You don't need to write this. We have a
डिमांड कर्व लाइक दिस, सप्लाई कर्व लाइक दिस, जहां पर ये मीट करा वहीं पर आपको प्राइस मिलता है। तो कमोडिटी का प्राइस डिसाइड कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। समझ आ रहा है आपको? सो दिस इज मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग एवरीथिंग। एंड व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ laissez-faire. Now see, he also said that any economy which is following these principles, wherein market decides everything, wherein government follows the policy of non-intervention, such an economy is working on the system of natural liberty. Natural liberty hai economy ke paas, that do whatever you want to do. Write down this point. Adam Smith called such an economic system as the system of natural liberty. As the system of natural liberty. System of natural liberty. Clear hai? And that is market economy. Number 2, non-market economy. Non-market. Market economy का revolution किसने लाया? Adam Smith. And who was behind the non-market revolution? Karl Marx. Karl Marx. Now see, non-market में these economies, market does not decide anything. Whatever is decided in the market, in the economy, is decided by the state. State will tell you what to produce. State will tell you how to produce. State will tell you for whom to produce. Every major decision will be taken by the state. तो वहां पर मार्केट कर रहा था, यहां पर स्टेट करेगा. Because market has no role to play, that is why the word non-market economy. So all the major central problems are answered by whom? The state. तो वहां पर central problems were answered by market. Central problems answered by market. अब वहां पर आपको लिखना है central problems answered by state. Now see, for the first time, when these ideas were propounded, we had a revolution, a bloody revolution in Russia on the basis of these ideas. इसको हम बाद में हम कहते हैं Bolshevik Revolution or the Russian Revolution, 1917 का. That was when Russia turned into a socialistic republic, जहां पर उन्होंने ये निजाम स्टेट का इंप्लीमेंट किया. कार्ल मार्क्स के आइडियाज इंप्लीमेंट किए एंड दे क्रिएटेड अ कम्युनिटी नोन एज अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जहां पर एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ. लेटर ऑन अ वर्जन ऑफ दिस ओनली, ये जो यूएसएसआर में रशिया में हो रहा था, अ वर्जन ऑफ दिस ऑल्सो वॉज सीन इन चाइना इन 1949, इंडिया की आजादी के बाद. चाइना इन 1949 ऑल्सो अडॉप्टेड दिस, बट अ मोर स्ट्रिक्ट वर्जन known as the communism. So the ideas of Karl Marx actually gave rise to two systems. One is known as socialist, another is known as communist. मैं इकोनॉमिक एंगल से बताऊंगा आपको, बस one line for each. Socialist and communist, both of them are what? Non-market economic systems, where decisions are taken by the state. State will take the decisions. Now, socialist economy, it was adopted by USSR and communist by China. Socialist was USSR, communist was China. अब USSR में pay attention, it is working on the non-market ideology. It is working on the Marxian ideology. जो मार्क्स ने बोला उसी पे काम कर रहे हैं. और यहां पर एक और चीज था, यूएसएसआर में
all natural resources were in the ownership of the state. Collective ownership. स्टेट की ओनरशिप में सब कुछ था, प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं. तो यू हैव ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अंडर स्टेट ओनरशिप. All natural resources under state ownership. Under state ownership. Under state ownership. While as in the communist model, you had state ownership. State ownership of all natural resources, including labor. Including labor. Including labor. Labor भी state ownership के अंदर था. Actually, he came up with the idea, Marx, कि शुरू में as a reaction to the capitalist economy, because Marx actually went to the Europe and saw this capitalist economy में काफी सारे problems हैं. When you give everything to the market and government is on the back seat, government is not interfering, they are following a policy of laissez-faire and government has no intervention policy, and you give economy to the private sector and private sector is deciding everything, then there is the emergence of this elite class. There is an emergence of the capitalist class that does the exploitation of the workers. इसीलिए Karl Marx gave the idea that we should take the power from this capitalist class and give it to the state. State will take care of everybody. There should not be any class. So he gave this concept as an idea of socialism, which later on turned into a more strict version of it, that is communism, जिसमें कोई class ही नहीं था. Everybody was equal. हर इंसान को उतना ही दिया जाता था जितनी उसको जरूरत है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं. When you yourself, when labor itself is under state ownership, तो लेबर की काहे की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पॉसिबल ही नहीं. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. Everything was under state ownership, state की प्रॉपर्टी. So that is the more strict version of it, communism. Now see, both of these systems, one given by Adam Smith in 1776, another one given by Karl Marx, seen in 1917 Russia and 1949 China. Both of these systems failed because they are more strict in their form. तो इन दोनों के फेलियर के बाद a third system emerged known as the mixed economic system. The mixed economic system. The mixed economic system. The mixed economic system. Now see, to understand the mixed economic system, I'll first give you a basic idea that what happened with these examples I put forward. सबसे पहले हम लेंगे US. तो I'll give you the timeline. Timeline से आपको समझ आएगा. United States in 1777 till 1929 became a capitalist economy. And capitalist economy is which economy? It is a market economy from 1777 to 1929. In this period from 1777 to 1929, US economy was flourishing like anything. दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड यूएस का था. कहा जाता है this was the time when US had around 66% of the total global gold reserves. 2/3 of the gold reserves were with US. इतना ज्यादा पैसा था इनके पास. और they created these multinational corporations that are selling their products in the entire world. आज भी आपका यूएस को हटा दो आप, फार्मास्यूटिकल बर्बाद हो जाएगा, आपका टेक्नोलॉजी आपकी बर्बाद हो जाएगी, वेपन्स इंडस्ट्री आपकी बर्बाद हो जाएगी विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूएस आज भी हाथी जैसा है.
हालांकि काफी कमजोर हो चुका है। हाथी को जब गोलियां मारते हैं वो स्लो डाउन होता है धीरे धीरे, एंड देयर इज अ टाइम व्हेन इट क्रैशेस, अचानक से ठप करके। एंड दिस इज द टाइम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स अबाउट टू क्रैश। इट्स लाइक डेट इज ओवर द टॉप, इन्फ्लेशन हैज बीन एट अ 40-year हाई एंड चाइना इज टेकिंग ओवर। अमेरिका बहुत कमजोर हो चुका है लाइक अभी इस वक्त, has been indebted by these bankers. So this is a time, I believe in the next 10 years you'll see the drastic change in the global platform where United States will be replaced by another superpower. Most probably it's going to be Israel. And great expansion of Israel would happen in just the coming years, 10 to 15 years we'll see. Israel will take over US as the global superpower in the West. In the West. There is another power जो bipolar दूसरे तरफ से है, चाइना, वो रहेगा, पर चाइना अपने में रहना चाहता है ज्यादा, डज नॉट इंटरफेयर, एवरीबडी नोज इट। चाइना अपना स्फीयर ऑफ इंटरफेरेंस सिर्फ एशिया में रख रहा है। इट डज नॉट गो टू पैसिफिक, इट डज नॉट गो टू अमेरिका टू मेस अराउंड अमेरिका, बट अमेरिका कम्स टू चाइना, कम्स टू साउथ चाइना सी। व्हाट हैपेंड रिसेंटली बिटवीन इजराइल एंड गाजा, यू सॉ दैट अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, एक ईरान के पास भेजा, एक गाजा के पास भेजा। तो अमेरिका का क्या लेना देना इसके साथ? बट नो, इजराइल के पीछे असल पावर इज यूएस ओनली, और यूएस कोलैप्स हो जाएगा देन इजराइल विल गेट अ फ्री हैंड। आप देखेंगे एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इवन इंडिया इज नॉट अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इजराइल। स्टॉन्च सपोर्टर नहीं है इजराइल का। लाइक वी डोंट गो कैटेगोरिकली सपोर्टिंग इजराइल एट ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इन द यूएन। इंडिया डज नॉट डू दैट। इंडिया हैज अ डीहाइफिनेशन पॉलिसी कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, और फलस्तीन का भी हमारा एक पुराना स्टैंड रहा है फ्रॉम जब हम आजाद हुए थे। तो दोनों को संभाल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन जैसा होना चाहिए इंडिया का है। बट द आइडिया इज अमेरिका इज द ओनली कंट्री जो उसको सपोर्ट कर रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जब भी यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आता है अगेंस्ट इजराइल, अमेरिका वीटोज इट। अमेरिका उसको थाम के पकड़े, जैसे होता है ना, जैसे आपका घोड़ा है, उसको अपने लगाम लगा के रखी है, पकड़ के रखा है, वो पकड़ के रखा है उस घोड़े को अमेरिका ने। अमेरिका गया, घोड़ा like it will ramp over all the countries, and you'll see the great expansion. Israel will take over US. That is going to happen in the next 15 to 20 years. Exactly, you're right number. Now see, अब इस वक्त अमेरिका, this was the time when they created a lot of wealth. आज जो अमेरिका है, it's primarily because of this time. And it was market economy in all these years that helped America create a lot of wealth, create these big companies, the big pharma, the big 5 multinational corporations, all trillion-dollar companies. आपका Google touched $1 trillion valuation, Apple $1 trillion, Tesla is a $1 trillion company, Microsoft is a $1 trillion company, Meta is a $1 trillion company. ये सब के सब $1 trillion वैल्यूएशन टच कर चुके हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर बेस्ड इन यूएस। आप समझ सकते हैं क्या वेल्थ क्रिएशन किया है, क्या मार्केट के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स दिए मार्केट को ग्रो करने के लिए। दिस वाज द टाइम टिल 1929 जब अमेरिका वाज प्योरली अ मार्केट इकोनॉमी। देन समथिंग हैपेंड इन 1929 दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, एंड वी कॉल इट द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, बहरान आ गया, ह्यूज ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं ग्रोथ पे आऊंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक रिसेशन, डिप्रेशन, टेक्निकल रिसेशन, रिकवरी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए डिप्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ड्रेन, इकोनॉमी कोलैप्स, योर बैंक्स कोलैप्स, दे गो बैंकरप्ट, कंपनीज गो बैंकरप्ट, देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज poverty levels, reaching the sky. That was in 1929 Great Depression. Now see, in all these years, everything in the economy was decided by whom? Market. What was the government doing? Policy of laissez-faire. We will not interfere. Adam Smith ने बोला है, you should not interfere. Now, Great Depression happened. At that time, the president, ये जिसको लिखना आप लिख लेना साथ में, the president of United States was Herbert Hoover. He was the president of United States in 1929. People got to him and asked him
America is under depression. What should we do? What should the government do to get us out of depression? So Herbert Hoover said, I will not be interfering in the economy because Baba Adam ne kaha hai, do not interfere in the economy. So I am not going to interfere. I am following a policy of laissez-faire. He is a staunch believer of Adam Smith. उसने कहा कि let's not interfere. Adam Smith ने कहा है कि market पे छोड़ो तो market पे छोड़ो. Herbert Hoover was asked, if you do not interfere as the government, who will get us out of the Great Depression? He answered that Adam Smith had said, whenever there is a distortion in the economy like this, there is an invisible hand that takes care of the economy. There is an invisible hand जो economy को ठीक कर लेगा. So we should not interfere. Government should not interfere. Invisible hand will take care of the economy. It will take some time, but it will get us out. So Herbert Hoover did not interfere. He was waiting for the invisible hand. The concept of invisible hand was given by whom? Adam Smith. Adam Smith had said, invisible hand hota है economy. किसी को पता है क्लास में what is invisible hand? 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था. Invisible hand that takes care of the distortion, that guides the economy to a common prosperity. No. There is an invisible hand that takes care, जो economy को guide करता है, which gives you common prosperity. भगवान का हाथ. भगवान का हाथ है जो ठीक कर लेता है सिस्टम. अब भगवान का हाथ क्या है? पे अटेंशन. उसने क्या बोला? That whenever there is a distortion, who will take care? Invisible hand. Now I told you, invisible hand will guide the economy to common prosperity. To common prosperity. Common good बोलते हैं. It guide us to the common good. Ultimately, what you require is everybody should be better off. हर एक इंसान खुश हो, हर एक इंसान is better off. उसकी जो condition है उससे अच्छा. So if you are better off, you have achieved common good. Now, when Adam Smith was asked, how do you achieve common prosperity? What is this invisible hand? तो उसने एक example दिया. उसने कहा, if you want to achieve common good in this class, how do you achieve that? Common prosperity. Everybody should be better off. So he told the individuals in the economy that we have Cross here, we have Abhishek here, we have people around here. तो मैंने Cross को बोला, what you do is, you do what is best for yourself. आप अपने लिए सोचो और अपना काम करो. He gave the concept of self-interest. क्या बोला? Self-interest. खुद का सोचो आप. You take care of your own self. Think about your own self. How would you become better off? Self-interest, अपने बारे में सोचो. So if Cross is thinking about his own self, if Abhishek is thinking about his own self, and everybody in the economy is thinking about their own self, we will have common good in the economy. Everybody will be better off. हर कोई बेहतर होगा अपने से, because वो अपने बारे में सोच रहा है. That is invisible hand. The concept of self-interest. Think about your own ambitions. Think about your own good. When everybody starts working on his own good, we will have common good in the economy, common good in the society. So invisible hand क्या है? Concept of self-interest. In fact, he said that individual ambition serves the common good. Serves the common good. It is the line of Adam Smith. Individual ambition serves the common good. हर कोई अपना सोचे तो common good हो जाएगा. Individual ambition serves the common good. So if you want to reach common prosperity, you have to wait for the invisible hand to take off, and that is the concept of self-interest. उसने कहा खुद से ठीक हो गए. Don't interfere. Even in the times of crisis, don't interfere. Invisible hand आएगा, people will start thinking about their own selves. When you start thinking about your own self, everybody will start thinking about their own selves. तो धीरे 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 इकोनॉमी से डिस्टॉर्शन से आप बाहर आ जाओगे. Fine. Now this was, can I say, this was a little concept of thinking about individual ambition
इज द माइक्रो कॉन्सेप्ट, कह सकता हूं इज द माइक्रो कॉन्सेप्ट। पर जो डिप्रेशन हुआ, ये डिप्रेशन माइक्रो लेवल पे हुआ, मैक्रो लेवल पे हुआ, मैक्रो। सो टू एड्रेस अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो यू आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो, इट डिड नॉट वर्क, ये फेल हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड टू गेट अस आउट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इट मिजरेबली फेल्ड। इनविजिबल हैंड आया ही नहीं। 1929 में when the great depression took course, हर्बर्ट हूवर से पूछा गया let's interfere, he said I will not interfere, I'm waiting for the invisible hand, as Adam Smith said. 1930 हुआ, he did not do anything. 1931 हुआ, he did not do anything. 1932 में there was another election in United States in 1932. So 1929 के बाद you had 1932, wherein Herbert Hoover was replaced by Franklin D. Roosevelt. Was replaced by Franklin D. Roosevelt, FDR. Now FDR said कि Herbert Hoover पागल हो गया है, we should not wait for invisible hand. The economy has been under depression from last 3 years. और self interest वगैरह ये सब किताबी चीजें is not working anymore. And he launched the policy of direct intervention. Direct intervention. So it was for the first time since 1777, for the first time in 1932, the government of United States interfered in the economy for the first time. Or they call this intervention as the New Deal policy. They call this intervention as the New Deal policy. This is the New Deal policy that inspired Dada Bhai Naroji, that inspired M.G. Ranade, and this is the New Deal policy that actually influenced Indian economy after independence. बहुत तगड़े तरीके से people were very much inspired by the New Deal policy of FDR. So FDR launched the New Deal policy in 1932 and launched what? Direct intervention. What is direct intervention? So to get the economy out of depression, government comes in and launches direct intervention. Direct intervention का मतलब हो गया you are spending billions of dollars in the economy. आप spend कर रहे हो, आपको सड़कें बनानी है, just spend money. When you keep on spending money, government को बोला गया just keep on spending money, लोगों के हाथ में पैसा आएगा. When you increase the government expenditure, what will happen? People will get money in hand. When people will have money in hand, what will they do? They will demand. वो खरीदेंगे. When they will demand, the market will take course, market will start supplying. When you are supplying, you are actually increasing the production. And when you increase the production, you increase the income. When you increase the income, you get out of depression. You get out of depression. This is a simple way. Government increases the expenditure, it increases the money in hand, it increases the demand in the economy. Demand बढ़ेगी, market supply करेगा, supply के लिए production बढ़ाना है, production जैसे ही बढ़ेगी income बढ़ेगा, and with higher levels of income you will get out of depression. This is the New Deal policy. They spent billions of dollars into American economy. जबरदस्त खर्चा किया इकोनॉमी में. We call it fiscal expansion. ये हम पढ़ेंगे बजट में. इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक बड़ा एक्सपेंशन किया था रिसेंटली. यू रिमेंबर when we had the COVID lockdown, Indian economy went down to -24%. ऐसे एक ठप करके गिर गया. We were there just at the verge of recession. टेक्निकल रिसेशन में हम घुस ही गए थे. एंड देन गवर्नमेंट केम इन एंड सेड आत्मनिर्भर भारत पैकेज, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस. वी आर स्पेंडिंग 20 लाख करोड़ इन द इकोनॉमी टू गेट अस आउट ऑफ द डिप्रेशन. तो दैट इज कॉलिंग द स्टिमुलस. आप इकोनॉमी को स्टिमुलस देते हैं बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. दिस स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इज नोन एज फिस्कल स्टिमुलस. Fiscal stimulus, giving a stimulus to the economy to get it back on track.
Now, where did the money come from? Generally, at that time, the money did not come from taxes, because how would you get it from taxes? The people are unemployed. Economy is under depression. You don't have much tax collection. जब economy depression में है, government does not get taxes. What they do is they go to the central bank कि पैसा छपाओ. वो पैसा छपाकर आप खर्च करते हो. वो पैसा छपा रहे आप खर्च करते हो. Printing money, you're spending it. We call it the helicopter money. हम क्या कहते हैं? The helicopter money. Helicopter money हो गया. Central bank keeps on printing currency and you're spending it like anything, just to get it out of depression. Exactly, Karan, you're right. It's known as helicopter drop. हेलीकॉप्टर से जैसे पैसा लगा रहे हैं, ऐसे पानी की तरह पैसा स्पेंड हो रहा है. Is it clear? When people have more money, they will demand. Demand के लिए you increase the production. Production बढ़ेगा, income बढ़ेगा. People will get income, a lot of income. They'll come out of poverty. Now see, ये कब हुआ? Direct intervention 1932. Now pay attention. Till this date, the concept of invisible hand, the concept of market economy, the concept of laissez-faire, who gave it? Adam Smith. Adam Smith ने जब ये concept दिया, who was Adam Smith? A brilliant economist. Economics के field में there was nobody from 1776 till 1930s. There was nobody who challenged the economics of Adam Smith. किसी ने challenge नहीं किया उसको. Nobody said कि laissez-faire गलत है. Nobody said invisible hand नहीं आएगा. This was for the first time that American government challenged the Adam Smith's economics. The government challenged it. They changed the policy. But till now, we have not seen any academic response to Adam Smith's economics. कोई नया economist नहीं आया जिसने challenge किया economics को. अभी तक कोई नहीं आया. FDR was not an economist. He just came up with a policy that was against Adam Smith and implemented it. But academics में, discipline में, we have not seen anyone who challenged Adam Smith till 1930s. Then came another economist in 1936. This was the turning point in American economy. In 1936, and his name was John Maynard Keynes. J.M. Keynes. J.M. Keynes. ये कब आया? 1936. And that is where things changed. J.M. Keynes said that Adam Smith was wrong. Laissez-faire unendingly नहीं चलता है. If market is deciding it, government should also interfere. अभी तक you had the policy of non-intervention. Till 36, John Maynard Keynes said that government intervention is necessary. The government intervention is necessary. उसके बगैर economy would not correct itself. समझ आ रहा है आपको? And don't take this guy lightly. John Maynard Keynes is the person. जब RBI सेटअप करना था तो हिल्टन यंग कमीशन केन्स के पास गया था टू टेक एडवाइस फ्रॉम केन्स कि हाउ शुड वी सेट अप आवर ओन सेंट्रल बैंक. तो आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट में केनीज हैड अ रोल टू प्ले, द बिग इकोनॉमिस्ट. और उसने पूरी दुनिया को बोला एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स चली काफी साल, बट नाउ देयर आर चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर. जैसे ही केनीज का इकोनॉमिक्स शुरू हुआ, एक नया ब्रांच खड़ा हो गया, वी कॉल इट केनीजियन इकोनॉमिक्स. उस पर फिर बहुत सारे लोगों ने काम किया. तो राइट नाउ अमेरिका की इकोनॉमी टिल 1932 वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. आफ्टर 1932 अमेरिकन इकोनॉमी में क्या शुरू हो गया? डायरेक्ट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सो आफ्टर इट अमेरिकन इकोनॉमी बिकेम a mixed economy. American economy became a mixed economy. What is a mixed economy? Where you have the role of the market as well as you have government intervention. So mixed economy is nothing. You have market
as well as government, both of them have a role to play. मार्केट भी गवर्नमेंट भी. मार्केट का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट हो गया पब्लिक सेक्टर. बोथ ऑफ देम हैव रोल टू प्ले. अभी तक हम क्या देख रहे हैं? मार्केट वॉज एंटायरली मार्केट, नॉन मार्केट वॉज एंटायरली स्टेट, बट इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वी हैव बोथ ऑफ देम. तो कैन आई सेफली से दैट अमेरिका आफ्टर 1930s इज नॉट अ कैपिटलिस्ट, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एनीमोर, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. समझ आया आपको? तो अमेरिकन इकोनॉमी में इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर वी हैव बोथ मार्केट एज वेल एज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. पर हु हैज द लीडिंग रोल इन द इकोनॉमी? लीड कौन कर रहा है अमेरिका में? हु इज लीडिंग? मार्केट इज लीडिंग. जब दो साथ होते हैं तो वन ऑफ देम हैज अ लीडिंग पोजीशन. तो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, बट मार्केट इज लीडिंग. That is why in America we say we have a market-led economy. We don't have a market economy. Market economy is separate. We have a market-led economy. Market is leading the economy with the government. समझ आ रहा है? Is it clear? हो गया एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर यूएसएसआर द डेट इज 1917 till 1989. USSR became socialist, which was a non-market system. Socialist. I told you both market and non-market systems failed. इसीलिए market economy had to shift to mixed. Now we will take an example of Russia, which was a socialist economy, that is non-market, how it turned into a mixed economy. Russia भी आज mixed है. दुनिया की हर कंट्री आज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे चलती है. Nobody is pure market, nobody is pure non-market. Everybody is there somewhere in the middle. Now, socialist में from 1917 to 89, it was entirely non-market. Now, 89 में क्या हुआ? रशिया में दो प्रॉब्लम्स शुरू हो गई. There were two problems. And these are the same problems I will quote when I come to China. चाइना और रशिया में सिमिलर प्रॉब्लम्स आई एंड इन द सेम डेकेड. चाइना इन अराउंड 1980s और 85 में दे चेंज्ड, और रशिया इन 1989. 1980s में दोनों को सिस्टम बदलना पड़ा. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बेसिकली टू प्रॉब्लम्स. बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी देयर इमर्ज टू प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी. पहला प्रॉब्लम क्या था? पहला प्रॉब्लम था स्टेट कैपिटलिज्म. State capitalism, and the second problem was internal decay. State capitalism, and the second problem was internal decay. पहले मैं लिखाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा आपको. स्टेट कैपिटलिज्म में लिखिए, स्टेट became the sole exploiter of the economy. इंटरनल डिके में लिखिए एब्सेंस ऑफ इनोवेशन. एब्सेंस ऑफ इनोवेशन. स्टेट कैपिटलिज्म में स्टेट बिकेम द सोल एक्सप्लॉइटर ऑफ द इकोनॉमी, एंड इंटरनल डिके में एब्सेंस ऑफ इनोवेशन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. Now you have USSR. Everything is under which ownership? State ownership. USSR as well as China. दोनों का एग्जाम्पल है. तो USSR लेने दो, चाइना रहो. Everything is under state ownership. There is no concept of private property.
no or limited concept of private property. You cannot even have a private property. You cannot even have like 10-20 canals of land. You don't have the opportunity to get that. Private property का concept ही नहीं. Now pay attention. When everything is under state ownership and you cannot create your own private property, first thing happened. पहले क्या हो गया? देखो. There was an economist by the name of Oscar Lange. He said this in reality. Oscar Lange, when he studied USSR and China, he told them that you should have some less control, you should give less control to the government and you should allow some market. But China and Russia, in their arrogance, they did not pay heed to his advice and they did not give any role to the market. Everything was under state. So what Oscar Lange said is, in your economy where everything is under the state and you're not giving any private, you're not giving any role to the private sector or the market, two things will happen in your economy. The first is, why did you create this system? You created this system, you gave everything to the state because you believed that in the capitalist economy, these few capitalists, they used to exploit the masses. तो आपके पास कुछ कैपिटलिस्ट थे in the market economy. In the market economy, you created an alternative to the market economy as a reaction to the market economy. Why? Because you believe that few capitalists, they exploit the workers, they exploit the masses. That was your idea behind it. But now what you have done is, you have taken control from these capitalists and you have given all control to one particular authority, that is the state. और सारा कंट्रोल उसी को दे दिया आपने. और आपको ये अंदेशा था, आपको ये दिमाग में लगा था कि स्टेट विल वर्क फॉर द कॉमन मासेस. बट व्हाट विल हैपन if the state itself will become corrupt and will start exploiting the masses? ऐसा भी तो हो सकता है. That state itself became the sole exploiter of the masses. State itself became the capitalist. इसी को उसने नाम दिया state capitalism, where state itself became the capitalist, where state itself became the exploiter of the economy. यही आपने यहां पर लिखा. What is state capitalism? Where state became the sole exploiter of the economy. State खुद ही exploiter बन गया. Is it clear? So this is one possibility. Oscar Lange said, in a country like USSR and China, you can have state capitalism, a situation where state itself became corrupt. I'll give you an example. Recently, in the last 8 years, the Communist Party of China के जो head है आपके Xi Jinping, he has imprisoned around 400 ministers in the last 8 years on the charges of corruption. इस लेवल का इन डेप्थ करप्शन है. हमारे यहां भी करप्शन है, बट नोबडी इज इम्प्रिजन्ड फॉर दैट. बट जनरली यहाँ पर जो पावर में होता है, करप्शन के चार्जेस हमेशा अपोजिशन पे लगता है. वंस द पावर टर्न्स, फिर करप्शन के चार्जेस फिर से अपोजिशन पे लगेंगे. तो ऐसा सिस्टम है कि स्टेट बिकम्स करप्ट, पावर करप्ट्स. सेम चीज रशिया में हुआ. आपने जब एक अथॉरिटी के पास पूरा पावर दिया, इट करप्टेड देम. चाइना में सेम थिंग हैपेंड. तो स्टेट बिकेम द एक्सप्लॉइटर ऑफ द मासेस. दे जस्ट हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ पावर. तो जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं, इकोनॉमी डिड नॉट फ्लरिश जैसे कि अमेरिका में फ्लरिश हो रही थी, पर चाइना और रशिया में उतनी फ्लरिशिंग नहीं. इनफैक्ट यू ऑल नो द बिगेस्ट मिलिट्री माइट इन द वर्ल्ड इज मिलिट्री माइट. इसके पास है सबसे ज्यादा Russia. They have more nuclear warheads, even more than United States. But their economy is crumbling. Economy strong नहीं है उनका. That is why Russia is not a bigger threat to America. China is a bigger threat. And China is not that powerful when it comes to military. China is almost half of what रशिया इज. चाइना बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है, अमेरिका के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बट उनके पास है इकोनॉमिक पावर. वंस यू हैव अ स्ट्रांग इकोनॉमी, यू बिकम अ स्ट्रांग मिलिट्री. खुद ब खुद हो जाता है.
आपको मिलिट्री माइट होने के लिए इकोनॉमिक पावर होना जरूरी है। अब रशिया इतना कमजोर क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसीलिए इट इज सेड दैट चाइना इतना बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए इसलिए भी है बिकॉज दे बिलीव, these are American economists, they say that China is going to be 3 times bigger than United States, 3 गुना ज्यादा strong यूरोप से भी ज्यादा। That is why India, we have very strong sentiments against China because we know what they've done in the Aksai Chin region, in the northeast, etc. Very strong sentiments, but we can't do much about China. इसीलिए China related news ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन यू विल नेवर सी दैट देयर इज एन इलेक्शन कोई कैंडिडेट है जिसको इलेक्शन लड़ना है, ही विल गो ऑन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट चाइना और चाइना को दिखा देंगे और चाइना को ये कर लेंगे। ये सब पाकिस्तान को रिडायरेक्ट होता है। चाइना को रिडायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू कैन नॉट मेस विद चाइना, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वो कंटिन्यूसली जंग करते रहेंगे मल्टीपल फ्रंट्स पे, उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके बावजूद वर्ल्ड कैन नॉट डू विद चाइना, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर चाइना को सैंक्शन लगा लिया आपने, जैसे ईरान पे लगाया, जैसे रशिया पे लगाया, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी आर नाउ रीडायरेक्टिंग इट टू इंडिया। अमेरिका समझ आ गया कि इंडिया इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग। इसीलिए अब फैक्ट्रीज, आउटलेट्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। वंस जब हम चाइना के कंपैरिजन में पहुंचे, काफी समय लगेगा। चाइना इज द ओनली कंट्री अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स जिनका $20 ट्रिलियन से ज्यादा उनके पास इनकम है। हम तो अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं है, तो काफी टाइम। हमारे पास जो टोटल रिजर्व्स है आरबीआई के पास अराउंड $600 बिलियन। चाइना हैज 4 ट्रिलियन। Imagine how much time it would take us to reach the level where China is today. That is why we don't mess with China. So China is a big economic power. Point बताइए, वहां पर भी state capitalism हुआ। You know, Alibaba, Jack Ma. Jack Ma said in an interview somewhere against the Chinese establishment, कुछ बोल दिया उसने। 6 महीने बंदा गायब था। A person like Jack Ma. He's like Mukesh Ambani of India. Can you imagine Mukesh Ambani 6 महीने गायब है? तो वैसा सिस्टम, you cannot go against the Chinese government. They don't like it. They don't like to talk about it in the public. आपके जो भी problems है, like Pakistan keeps on talking about Kashmir and Muslims of India and all that, Palestine, etc. Pakistan, why doesn't Pakistan talk about the Uyghur Muslims in China? Because गलती से भी अगर उन्होंने वो highlight कर दिया at the international level, चाइना उनकी बैंड बजा देगा। तो चाइना बात करता है, but behind closed doors. When Imran Khan when he was the Prime Minister of Pakistan, he was asked this question: "You keep on talking about Kashmiris. Why don't you talk about the Uyghur Muslims of China?" He said, "We have raised it, but behind closed doors. We cannot talk to China like publicly. They don't like it. आपको बात करनी है, दरवाजा बंद करो, फिर बात करो। और फिर अंदर क्या होता है वो तो पता नहीं है हमें, अंदर क्या, किसको मार पड़ती है, we don't know. ठीक है? That is how China deals with situations. Now, state cap. आपको समझ आया what is state capitalism? What is state capitalism? Where state became the exploiter of the economy. What was the second thing? Internal decay. Now, tell me. मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी जितना मुझे लगता है 10-15 साल अगर जिंदगी रही, 10-15 साल को पढ़ाऊंगा, उसके बाद I'll retire. I'll have sufficient money. I'll buy some land, some agricultural land, और भेड़ बकरियां, गाय वगैरह सब कुछ एक जगह पर रखकर या फार्मिंग करेंगे और उसी में मर जाएंगे एक दिन। This is my plan. लेकिन जो लैंड खरीदूंगा मैं, बड़ा फार्म हाउस होना चाहिए और बड़े से जमीन वगैरह वगैरह, 50-60 लोग काम करने वाले। That is what I want to do जब मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, और उसके लिए मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। I give like 7 to 8 hours a day. पढ़ाने में चला जाता है, फिर प्रिपरेशन में चला जाता है, फिर करंट अपडेट करने में चला जाता है। सो आई गिव एवरीथिंग टू इट। अब लेट्स सपोज आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम डूइंग द सेम थिंग इन कम्युनिस्ट चाइना 1980 से पहले, या इन रशिया, और आई एम वर्किंग सो हार्ड, बट द मोर आई वर्क द गवर्नमेंट डज नॉट गिव मी एनीथिंग। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना नहीं सकता और उतना ही दिया जाता है जितना मुझे जरूरत है। दे डोंट लेट मी अर्न मोर। तो
So I do a lot of research, I do a lot of stuff, I do a lot of work, but they don't let me have my private property. So why would I work hard? अगर उतना ही मुझे मिलना है जितना सबको मिल रहा है, why would I work hard? Why would a researcher work hard? Why would an innovator work hard? Why would they innovate in the first place? Because they're not getting much. एक researcher जब एक दवाई बनाता है, when an engineer or a scientist comes up with an innovation, what is the incentive behind that innovation? Incentive is profit. Tomorrow I'm going to sell this. It's going to be path breaking. मुझे पैसा मिलेगा इससे. But in China you cannot do that. In Russia you cannot do that. आपने जो भी बनाया state ownership. वो हमारा है. You'll only get what you deserve, or what you need. That's what you get. So when this happens, people do not innovate anymore because उनको incentive ही नहीं है. Incentivization profit के हिसाब से मिलता है. When you cannot earn much profit and have your private property, you don't innovate anymore. That is absence of innovation. Absence of innovation हो गया in countries में because there was absence of private property. Because of that, internal decay हो गया in these economies. Internal decay. Now see. So these were the two problems that happened in these economies. So in USSR, which became a socialist till 1989, because of these two problems जो मैंने आपको अभी बोली, one is state capitalism, the another is internal decay. Russia decided that we have to shift. Our economy is so weak, we cannot sustain the socialistic system or a socialistic structure anymore. We have to launch some different policies. So in 1989, they launched two policies. One was known as perestroika and the another one was known as glasnost. Perestroika and glasnost. What is perestroika? Is the Russian word for restructuring. Restructuring. And glasnost is openness. They just opened up their economy for the private sector. They restructured their economy. Restructuring and openness. Once they came up with restructuring and openness for what? Everything yahan tak till 1989, everything was controlled by state. And after this, you open your economy for the private or market. तो जब आपका state और market दोनों साथ में काम कर रहा है, that becomes mixed economic system. Mixed economic system. So till 1989, you were a state economy, a command economy, but after 1989, you became a mixed economy. You allowed the private sector, you allowed the market in your country. तो जब मार्केट आ जाता है यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग के बाद और यहां पर आपका नॉन मार्केट था, दोनों मिल गया और आपका क्या बन गया? मिक्स्ड. क्लियर? अगेन सेम थिंग हैपेंड इन चाइना. 1949 till 1985, China adopted communism. Communism मार्केट है, नॉन मार्केट? नॉन मार्केट. 1985 के बाद अगेन द सेम प्रॉब्लम्स हैपन. स्टेट कैपिटलिज्म एंड इंटरनल डिके. दे लॉन्च्ड ओपन डोर पॉलिसी. When they launched open door policy, they became mixed. They became mixed. They became mixed. Clear हो रहा है? They became mixed. Another example is India. 1947, 1991. बताइए, what was India till 1991? Isn't India socialist anymore? Huh? Now see, socialism of Russia
and socialism of India is two different entities. India was also socialist. India was also socialist, but it was not non-market. It was mixed from the beginning. India भी socialist था, like USSR, but we did not adopt Marxian socialism. Marx का socialism नहीं लिया हम. We just transformed it to a Nehruvian socialism. इंडिया का जो सोशलिज्म है, that was from the beginning it was mixed. समझ आ रहा है? But remember, when you have mixed, you have the public sector as well as the private sector. But in India's socialism after independence, more role was given to government, public sector. So it was a government-led, a state-led economy. More role to the public sector. Then comes 1991. India is still socialist. Socialism हटाया नहीं अभी हमने. That means India is still mixed. But now public sector का रोल क्या कर दिया? कम and private sector का रोल बढ़ाया. So who is leading the economy right now? Market. Tell me, telecommunication में you only once had BSNL. आज who is leading the telecommunication sector? Jio. Is it private sector? Yes. Education में who is leading the education industry? Is it the public schools or the private schools? Private schools. Who is leading the health sector? Public hospitals, private hospital. Private hospital आपका हर जगह पहुंच गया है. Tourism, private. Transportation, private. Ola, Uber, leading everything. है कि नहीं? That is market led. Government भी साथ है. जहां पब्लिक हॉस्पिटल है वहां प्राइवेट हॉस्पिटल है. जहां प्राइवेट स्कूल है वहां पब्लिक स्कूल भी है. गवर्नमेंट साथ साथ है. But leadership role has been given to the private sector after the LPG reforms. Is it clear? Now we'll make a table. This table will sum up everything that I've taught you today. I'll give you one last table. This may will understand the difference between communism, socialism, and mixedism. First feature: ownership of means of production. Ownership of means of production. Production के means. Who is owning it? Capitalism में do we have state ownership or private ownership? Private ownership. Socialism में public ownership. Mixedism में private plus public ownership. Number 2, economic motive. Economic motive. Economic motive. What is the economic motive in a private, in a capitalism? Profit. We just want to earn profit. Socialism में
the objective is social welfare. Social welfare. और मिक्स में क्या होगा? प्रॉफिट प्लस वेलफेयर. आपको लग रहा है इंडिया में प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों का काम चल रहा है ना? यस. प्रॉफिट प्लस वेलफेयर. सेंट्रल प्रॉब्लम्स. सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन डिसाइड करता है कैपिटलिज्म में? फ्री मार्केट. फ्री मार्केट. What to produce, how to produce, for whom to produce, economic efficiency, full employment and growth. सोशलिज्म में कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल प्लान्स. Central plans. The government will come up with a central plan and decide the central problems. Mixedism में free market and central planning, both of them. Free market and central planning. Government role. Government role. So in the capitalism, the government's role is only regulation. Only regulation. In socialism, it is total involvement. Total involvement. In mixedism, you have limited role. Limited role. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. कैपिटलिज्म में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइक्वल? अनइक्वल. सोशलिज्म में यू हैव इक्वल. और मिक्सडिज्म में यू हैव लेस अनइक्वल. लेस अनइक्वल. Then you have economic freedom. Economic freedom. Do you have freedom in capitalism? Complete freedom. In socialism, lack of freedom. In mixedism, limited freedom. Limited freedom. Major problem, very important. Last one. What is the major problem of capitalism? इसका जो major problem है, that is it breeds inequality. इसमें inequality आता है. Capitalism में inequality आएगा. Major problem is inequality. What is the major problem of socialism? Inefficiency. Inefficiency. और मिक्सडिज्म में क्या है? Inequality and inefficiency. मगर limited. 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 Inefficiency in the sense of government is not inefficient. Government is not efficient. मान के चलिए गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज. गवर्नमेंट एंटरप्राइज हमेशा लॉस में क्यों होता है? इट्स नॉट एफिशिएंट. In comparison to BSNL, Jio is more efficient. In their running, the process is more efficient. वो सिस्टम. आप अगर गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट का जॉब कर रहे हैं, ज्यादा काम कहां करना पड़ेगा? प्राइवेट में, है कि नहीं? वो एफिशिएंसी देता है.
अब तो गवर्नमेंट में भी बदल रहा है सिस्टम. You cannot get efficiency in the government unless you start running the government as a private company. और गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, जस्ट किक हिम ऑफ, उसको फायर कर लो, हटा दो, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है. देयर शुड नॉट बी दिस कि नहीं एक बार गवर्नमेंट में घुस गए फिर कोई निकाल नहीं सकता, सस्पेंशन पे सस्पेंशन हो रहा है, घर पे बैठे हैं 6-6 महीने फिर वापस आ रहे हैं. नहीं, जस्ट डिसमिस देम ऑल टुगेदर. वो एफिशिएंसी देगा आपको, इमीडिएट एफिशिएंसी अगर आप चाहिए तो जस्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू किक एम्प्लॉइज, जैसे कि प्राइवेट में होता है. वो एफिशिएंसी इमीडिएट देगा आपको. इसमें क्योंकि होता है यू गेट लेड बैक, आपको पता है कि कोई कुछ करने वाला है नहीं, एक बार घुस गए तो निकालने वाला कोई है नहीं, वो प्रॉब्लम है. These are your systems, economic systems. Next topic is consensus. 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 देखिए, द वर्ल्ड नाउ एट प्रेजेंट, अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, 1929, 1989, 1985, 1777, पुरानी चीज. नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट. राइट नाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तरफ दुनिया का ऐसा है दैट आर फॉलोइंग द वॉशिंगटन कंसेंसस. Following the Washington consensus. Most of the world is following Washington consensus. On the other hand, you have an alternative to the Washington consensus known as the Beijing consensus. साथ साथ बनाइए, इसी पूरे फ्लो चार्ट में I'll finish it. Beijing consensus. On the one hand, you have Washington consensus. On the other hand, you have Beijing consensus. अब ये वॉशिंगटन कंसेंसस किसका है? दिस इज द कंसेंसस ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी. और बीजिंग कंसेंसस क्या है? इट इज सिंपली चाइनीज मॉडल. चाइनीज मॉडल. This word was given by John Williamson. John Williamson. And Beijing consensus was given by Joshua Cooper Remo. Joshua Cooper Remo. वॉशिंगटन कंसेंसस के कुछ और नाम भी है. इट इज नोन एज नियो लिबरलिज्म, मार्केट फंडामेंटलिज्म, and even sometimes known as globalization. Globalization. It focuses on market-led economy. Market-led. While Beijing consensus focuses on state-led. State-led. State. Now see, whenever we have a new country that has got its independence, they are actually
they have two options to go for. Either you give control to the state and control your natural resources, आपके हाथ में है सारे natural resource, then America is not happy with you. This happened with Iraq, the same thing happened with Iran, the Middle East, Syria, Egypt, Lebanon, Libya, हर जगह. If you take control of the natural resources, primarily oil, America is not happy with you. So you privatize, globalize, let American companies come into the country. America was not happy with India. India 47 के बाद क्या बना? Socialism. Close the system. Will not let the companies come in. Because we understood the exploitative nature of the companies. It was a company only that came back, known as the East India Company ही थी ना वो, फिर वो निकली नहीं बाहर. That is why बड़ी मुश्किल से कंपनी को निकाला. We close the system. Will not let you come in. But कैसे तैसे करके उन्होंने इंडिया को इतना कमजोर कर लिया. And 1991 में हमें जाना पड़ा IMF के पास. We had to go to IMF and we asked for the biggest ever loan that they provided us. Because पैसा ही नहीं था हमारे पास. So we went to IMF, they gave us the money, but when they give the money, they put their strict conditions on India. Economy को open करो. Let our companies come into. आज आप imagine करो, imagine a situation like Russia-Ukraine crisis with India. Imagine a situation when Russia invaded Ukraine and was sanctioned all over. All American companies started coming out of Russia. Google came out of Russia. Apple came out of Russia. बोला कि नहीं अब अमेरिका को कोई सर्विस नहीं देंगे. Imagine, God forbid, a situation like that with India, जहां पर Google is telling you, you cannot search me anymore. Instagram खत्म, Twitter खत्म, सब कुछ खत्म. What would India do? This is what they've done to us. Washington consensus जैसे ही adopt किया, we were heavily dependent on them now. You cannot imagine a scenario जहां पर हम पर sanction पड़े. और इस लेवल के sanctions that companies stop providing us their services. आपका आधे से ज्यादा डिजिटल मार्केट जो इंडिया का है, it is running on Amazon Web Services. If Amazon stopped giving us their web services, आपको तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा. जो एप्लीकेशन आपको है ना Edukemy की, उसमें भी वेब सर्विसेज Amazon की ही. तो क्या करेंगे Amazon के बगैर? Amazon का जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है, it is just tip of the iceberg. Amazon वाली ऐप ई-कॉमर्स is nothing compared to Amazon Web Services. दुनिया का सारा सिस्टम उस पर चलता है. So this is the system. You are like it cripples us. China has not allowed it. China ने क्या किया? They have their own Google, they have their own Facebook, they have their own YouTube, they have their own WeChat. कोई अलाउ ही नहीं करते वो फॉरेन चीज को. अगर किसी फिल्म को भी अंदर आना है रिलीज होने के लिए, they only allow, I guess मुझे पूरा याद नहीं, they only allow around 4 films a year. 4 फॉरेन फिल्म्स हम अलाउ करेंगे और वो भी स्क्रूटनाइज करेंगे कौन सी अलाउ करनी है कौन सी नहीं अलाउ करनी. So our population is not indoctrinated. That is why you see the highest level of patriotism in the Chinese population. Highest level. Is they don't allow the foreign ideas to come into the country. ये system. Now today we have people in India, who are against the idea of India. This is why, because of the foreign influence that we have. तो ये है system. They've closed the system in such a way that they have their alternative Beijing consensus. जो मानता ही नहीं है सब. They don't allow these companies to come. But we have adopted the Washington consensus. We are with the IMF and the World Bank and the US Department of Treasury. तो ये है system दो consensus का. I've completed the economic systems. Tomorrow we'll directly start national income in GDP. और कल का topic is very important because once you understand GDP, आपको आगे का growth, development सब समझ आएगा. And tomorrow I'll also be touching on the concepts that are going to help you in geography, economic geography optional as well. तो वो भी coincide करता है economy के साथ, वो सारे topics जो हम discuss करेंगे. So thank you so much. If you have any doubts, you can come to me. जितने भी आपके doubts होंगे, anything regarding any topic, I'll give you some extra time outside the class.